In this worked example, we are going to calculate the average CH bond energy. Calculate the average bond energy of CH bond using the relevant enthalpy changes of formation and enthalpy changes of atomization values in the table below. Before this question, you should be able to know what is the enthalpy change of formation when products are formed from their reactants. Atomization क्या है? When gaseous atoms form from its respective atom in its standard state. अगर वो CH solid it would turn into Ca gas, लेकिन atom ही produce होगा in delta H atomization like we see the definition below. So what do you have? You have the enthalpy change of formation of CH4, that's 74.8 kilojoule per mole, minus 74.8 needed to form methane. If you talk about delta H atomization, half moles of hydrogen gas is formed from plus 218 kilojoule per mole. Your atomization of carbon क्या है? Plus 717.7. अब हम क्या करें? Again, write down the equation of dissociation of methane at top. क्यों हम dissociation of methane क्यों ले रहे हैं? Because अगर हम methane को dissociate करेंगे, you would get your hydrogen separate as well and carbon separate as well. तो हम क्या करेंगे? CH4 breaks into carbon and 4H. Simple. How many carbon does CH4 contain? 1. How many hydrogen does CH4 contain? 4. ये हमने लिख दिया. एक साइड तो हमारी ये कंप्लीट हो गई है. Then we're going to write down the elements at the bottom. What elements are present in the reactants? हमेशा हम elements कहाँ से लिखते हैं? Which are present in the reactants. What elements do we have? Carbon, graphite. कितने हैं? 1. And what is the second element? Hydrogen. Hydrogen is written in diatomic form. तो वो 2H2 हो जाएगा. Then we have written the elements as well. एक एरो आप ऐसे लगा देंगे, वो बल्कि हम आगे देख लेते हैं. So this is normal. Delta H नाम दे दिए. You can name it delta H R, delta H, delta H1, 2, whatever you want to name it for your information. ये जो elements थे, these elements combine together to form CH4. Am I right? So what would we call it? Delta H formation of CH4. ठीक है, because simple है, these elements combine to form CH4. तो वो क्या हो जाएंगे? डेल्टा H4 और इसके एरो की डायरेक्शन भी इस तरफ लग जाएगी. अच्छा, अब ये क्या क्या हो रहा है? If you look at it closely, this was carbon graphite in solid form. Carbon graphite is turning into carbon gas. तो क्या हो रहा है? डेल्टा H atomization of carbon. सेकेंड अगर आप चीज देखें, 2H2 गैस स्टैंडर्ड कंडीशंस में is turning into atom. ये भी क्या हो रहा है? एटमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन. बट इसको हम इंटू 4 करेंगे. वाई? क्योंकि ये देखें, ऑलवेज जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, टू थिंग्स, रिमेंबर टू थिंग्स. व्हेन यू आर राइटिंग, नाउ लिसन केयरफुली, नोट इट डाउन. व्हेन यू आर राइटिंग द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कौन से होते हैं? दिस ऑल्टरनेटिव पाथवे. व्हेनेवर यू आर राइटिंग द एलिमेंट्स, you look at the reactants while balancing. When you're writing the elements, you look at the reactants while balancing. But when you're writing the bond energy, कि bond energy के साथ मैंने कितने लिखने हैं? Into 4, into 2, into 3, what? While balancing the bond energies, for example, 4 into atomization, while balancing the bond energies, you always look at the products. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दो रूल हैं. While balancing the elements, you always look at the reactants. But while balancing the bond energies, you always look at its products. तो प्रोडक्ट से मैंने देखा कि अगर मैं कार्बन की होऊंगा, कार्बन की would be multiplied by 1 because it's 1 written over here. But enthalpy change of atomization of hydrogen would be multiplied by 4 क्योंकि आपके पास products में 4 hydrogens as 4 hydrogen atoms are present. अब डेल्टा H कैसे निकलेगा? अब डेल्टा H कैसे निकलेगा? इस तरह करके. तो यू हैव टू, अगर आप इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, हमारे पास किस तरह की है साइकिल? ये है, ये है और ये है. ठीक है ना? इफ आई वांट टू फॉलो this direction, what do I have to do? मैं इस तरह करके जाऊंगा. ठीक है ना? So which arrow would I have to reverse? This one, right? इस वाले arrow को अगर मैं reverse करूंगा, तो मेरी ये वाली direction follow होगी. And by reversing this reaction, this delta HF would turn into minus delta H. ट्वेल्व रूल फॉलो कर रहे हैं ना, तो मुझे एरो हेड की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी. बिकॉज आई हैव टू गो, अगर मैंने ये वाली डायरेक्शन फॉलो करनी है, आई हैव टू गो लाइक दिस. और अगर इतना जाना है, these arrowheads are matching. ठीक है ना? But these arrowheads are not matching, तो मुझे इसके डायरेक्शन रिवर्स करनी पड़ेगी. This would turn
माइनस, तो उसको मैंने माइनस एच एफ करके लिख दिया है, एंड डेल्टा एच एटमाइजेशन वुड रिमेन पॉजिटिव, एंड हियर यू ऐड द वैल्यूज, और आपके पास आंसर आ जाएगा फॉर द एंथैल्पी चेंज ऑफ, बस आपके पास कुछ भी डेल्टा एच वट एवर यू वांट टू नेम इट, गॉट इट? Yes, sir. ओके जी।